Okay. I think yesterday we discussed the flow till template creation, batch creation, and assigning the instructors, as well as we discussed load type. What is load type and load conduction report? So we will continue with that, and we will try to finish the registration module today. So I will use the same template that we have created yesterday, or we can also take another one also. So just we will go for template, view upward template. Then we have to select here, same process. Click on offered subjects. So you will be able to see the template that you have already created. Here you will see the batches and all these things. Now, next thing is adding the students that we will discuss. We have created a template in second semester. So basically, we finish with this creating batches, assigning the instructors. Now, how to assign students into the batches? For that, we have to do the subject registration. And for doing the subject registration, we must have students in these divisions. The divisions that we have added, we must have students in these divisions. Now, how to get the students in these divisions? Let us assume that the template that we have created is for second year. It means already some students will be there in the first year, and now the fresh year is started, and those student needs to be promoted to the next year. So all those students will be taking admission to second year, and those students are eligible to second year. So we have to first promote the students now. I'll just go through that flow. Here you can see we have completed this division offering. Then we have completed this subject batch creation. Now we will see how we can go for the student side. So for student side, first we have to import roll call list, or we have to promote the students to the next academic year. So first of all, we will see how to promote the students to the next academic year. There are two ways. One is the import, and one is the using promotion link at the front end. So to promote the students directly from one year to next year, or one class to next class, we have a link. So I'll directly show that link. I think it's off. There is a link, promote students. Yes. So we can use that particular link to promote the students directly. We have just make that link activated. I will activate it, and then we can promote. Yes, there is a link, promote students. So under this module, registration division master, there should be a link, promote students. So we have to access this link, and on this form, you will see this interface. You have to fill the details here, previous year and semester details, and next year and semester detail. Now, what is previous year and what is next year? Previous year and semester is the one in which the students are currently present, and the next year means the year in which you want to promote the students. Say, in our case, we have say created a template in second year, and we want the students of first year who are in 22-23 academic year, 22-23 first year, they should be promoted to 23-24 second year. So same we have to select here on this form.
So your selection will be like this. Previous academic year will be 22-23, and previous semester either one or two. Now definitely it will be two, because students are already promoted from first to second semester in the same academic year. So you will select second semester. Then year, previous year of the students will be FE, first year, and the year in which you want to promote will be current academic year 23-24, which is going on. Then if it is current semester is one, then you will select one and promote the students to second year. So we are promoting from first to second year. Then here we have to select program type, branch, then we have to shift, we have to select the shift, then logic. So mostly we select this logic carry forward as it is. We don't want to carry forward the students with alphabetical order. And we just have to click on proceed button. So student will be promoted from first year to second year. But before this, we must have our divisions offering ready. If your template is not ready, that is okay, but your divisions must be offered in the year in which you want to promote the students. Your division must be ready over there, and then this form will work. Similarly, say now current year 23-24 is going on, and the semester is second. You want to promote the students in the same academic year, but from first to second semester. So in that case, you have to select previous academic year as 23-24 only. Semester will be one, and students will be in second year itself, but they are in first semester and you want to promote them to the second semester. So the next year will be again same 23-24, semester will be two, and year will be again second year. And then you select program type, branch, and the logic and shift everything and click on proceed. So here the students will be promoted to the next academic year. So in this way we can select or we can proceed the promotion of the students. So this was the one way by which we can promote the students to the next year. Now if the students are of first year, then there is no need of promotion. Okay, we can directly assign the roll calls to the student using the import roll call list, or there is another way also to promote the students. By using the import facility, we can assign the roll call to the students, and using that import facility, the promotion will happen. So that we will discuss now. If you don't want to use this form, then the second facility, or the second way to promote the student is import roll call list. You all might be aware of it. So we have one form, import roll call list. So it is again under registration, division master, import roll call list. There is a sample file that we have to fill. I'll just show one ready sample file. How exactly we have to fill that sample file, and then how the students will be promoted. Yes, for this institute, I have already made the file. You can see here in this file, we have to fill TRN number, name of student, roll number of the student, then academic year and semester, the current one. Okay, you have to fill the details of the current academic year and semester. Then what is the current class? Student might be in any academic year and semester in any class previously, but you have to fill the details of current year, semester, and class over here. So current class FY, current division, then name of the branch of the student, then shift of the student, or you can say this is not the shift of student, this is a shift in which this particular division is offered by you. On this division offering page, you can see here the shift is general. So that shift you have to fill it over here. And then module, the module in which this particular division is offered, here the module is also displayed. So that particular module you have to fill it over here. Just import this particular roll call list over this form, and your roll calls will be imported in the current academic year. Once the roll calls are imported, you can say the promotion is done or completed. So in this way, you can promote the students from one academic year to next academic year, or from one semester to next semester. So this is to be done.
Now let us assume that promotion is completed. We have completed the promotion of the students, and now students are available in the divisions. If we see the template, you can see the learner count here. Earlier it will be 0. After import or promotion, you will see the learner count here. Now how to do the subject registration? So there are multiple ways of doing the subject registration. The first thing that we will discuss is a registration by ERP coordinator or the faculty, and the second one that we will discuss is by student. We can do the registration of the student, subject registration of the student, using faculty login also and using the student login also. First we will see what is registration by this faculty login. So in the template itself, in front of batches, there is a registration button. We have to click on this registration button. The roll call of the student will appear in the drop down. All these flags, join flags, will be off. Okay, see, you can see those students who have 0 credit, who have not registered, for this join flag will be off. Okay, we just have to select the students from this roll call list. Then we have to select the subjects. Say for these students, second and third subject, these are compulsory, so you can select them blindly, compulsory subjects, and you have to click on apply subject registration. But before that, you can see here student have not paid the fees, and if college allows the student to register for the subject without fees payment, in that case you just have to click on this check to allow registration if the fee is not paid by the student. अगर स्टूडेंट ने फीस पेड नहीं किया है फिर भी कॉलेज अलाउड करना चाहता है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स. In that case, all students who have not paid the fees, those also included in the subject registration. And when you click on apply, the registration will happen. So this is how the students are enrolled for those particular subjects. Now this is we have done for compulsory subjects, but how to do it for electives? So for electives, again, we have to select the students and select the subjects. But now we have to decide. Here there are two optional subjects. One is DCS, one is internship. Let us say that we want to do the registration of DCS. So we have to select the only those students who want to register for DCS. Say these 4 students are there who wish to register for DCS. So select those 4, then click on this particular checkbox and select the subject DCS from the drop down, and then click on this apply button. Then after this, say if the next 4 students want to register for internship subject, so again you have to click on this particular checkbox. Then from drop down, sorry, yes. So we have to select the students who are applicable for that subject. Then here select the subject, and from drop down you will select the correct subject which is to be registered. So internship, check and apply the bulk subject registration. So in this way you have to do bulk subject registration of elective subject also from the front end. Now this is one way. Using the front end facility, we can do this subject registration. There is also a facility of doing the subject registration using Excel import. So in registration module itself, you can see that particular facility. Subject registration master, bulk subject registration. If you go to bulk subject registration on this page, there is an import form available. Import bulk subject registration. Using this facility also, we can import the registration of students. For that, we need a sample file. We have to fill that sample file. We have to fill the data in the sample file and we have to import it. Now, what are the details that needs to be filled? Academic year, semester, PRN, candidate name, class, all these details which are required for importing the roll call list that is to be filled, branch, roll number, all these details are available in the ERP itself. You have to select it. Then in front of students, you have to write the course code and course name.
that you have to write it over here, module, and then check fees paid, whether you want to check the fees paid or not. So that we have to fill it over here. And then these are the optional things that we can do later on also at the time of exam module. So using this form also, import bulk registration will work. Will not go into the detail by filling the Excel. You can understand it just by reading the headers. The next, so this is how we can proceed for the registration using this front end facility also, or using this Excel import also. Okay. Now we will see how to do the registration from the student side. Student registration कैसे करना है, that we want to discuss. So whenever you want to do the student side subject registration from the student login itself, first thing is we have to set this late joining fees master. Using this master, we basically set the fees for registration, and we also set the date of registration, start date of the registration and end date of the registration. So now we will discuss how to start the registration of students using the student login itself. So there is a link, set late joining fees master. It is again in the same role, subject registration master. You have to click here, select the fees type category as registration fees, select academic year, select the program type for which you want to enable the registration, and the year for which you want to enable the registration. Okay. Then here you can set the fees if the college has a policy to get or to take a payment of some fees for the subject registration, like PCCOE. I think they take some 150 rupees for registering each subject. So that fees can be set over here. If college does not want to take the fee, you can set it 0, but you have to set the registration start date and time also. So on which date the registration should start and on which date the registration should end. Along with the timing, you have to set it, and you have to click on the set fee button. Okay. Then if there are any elective subjects, then you have to fill the buckets for the elective subjects. So that you can see here. Just type bucket. So you can see this elective subject division wise bucket. Again, it is in the registration master itself, subject registration master. So here again, you have to set the bucket capacity. Again, the bucket has the 3 types: division bucket, program bucket, and institute bucket. What is division bucket? Is basically from division, how many students you want to allow for the registration to the electives. Then program means what is the higher limit from that particular program for the students to register. So if you set 100, it means what? For this particular program or from this program, 100 students will be allowed for the registration. That is the bucket limit. And this is the institute bucket. Institute bucket, if we set 100, in that case, from all programs, if the number of students who have registered for this subject exceeds 100, then the registration will not be allowed. That is called as institute bucket. So that we have to set it over here. And once we set this particular bucket, then we can proceed for the student login for the registration. Okay. I'll just log into one of the student account and we will see how this particular registration will work in the student login. I'll just delete the registration of one of the student first, and then we will proceed further so that I can show you that form in the student login. Now to delete the registration, you can see this form, student division form. This is very important. You will get all detail about the student in this form.
registration division master student division. All the details of the student are visible here, all are also editable. Just below here, you will see here the details of the division. Here the student has registered for 6 subjects. I will just delete all the subject first. Then from this registration flag, I will make this flag has joined flag off. Okay. So there is a facility to on or off this flag in bulk also. Here you can see that facility, bulk join. If you click on this off button, for all students under this list, the flag will be deactivated. Okay. So for student side registration, this flag must be inactive. I will bypass to the student side. Then there is a registration module. Click on registration. Student joining or registration, that we have to click. Division not allocated. Okay. We have to set the academic year and semester for current. That we will do first. Your academic year and module should be set to the current academic year and semester in which you want to register the students. Now the template that we have offered is for 23-24 semester 1. So this should be set as a current for the registration module. So we will change it. Registration. Now you can see here 24-25 is activated. We will just activate this 23-24 semester 1. So this 25 will be deactivated automatically. Then we will see. Yes. Now you can see here the subject registration form will open. Click on this form. Now there is one role type setting also, whether you want to display one notice to the student. I'll just show that role type setting also. That is important actually. Some colleges do take that disclaimer from the student. Undertaking, yes. If we turn on this setting, before the start of registration, student will see one undertaking that I have read all the terms and conditions of eligibility and I accept those conditions and so. So that particular undertaking will be displayed first. Student has to accept it and then student has to proceed. Okay. So now student will see this kind of form in his login. Here student have to select the subjects that he needs to register. Also, if there are electives, just like this form, student will be able to select the subjects using the drop down and students will click on the again this particular undertaking and join course. So in this way student will do the subject registration from his login itself. Okay, have you got this? I think I'm not going into much detail, but I'm just showing you the process how the student will register. So in the student login itself, this form is there. The same way the faculty is doing the selection of the subject over here. The student will select the subjects from the drop down if it is elective subject. So that will be done. Okay, so this is the process by which the student subject registration is completed. Now we will see how to deal with some changes in the registration, how to deal with the addition of the subject registration. Then what is exactly this fees paid flag and all that thing. So that we will discuss. Sir. Yes. So if we selected wrong subject for the student, so it can be edited? Yes. From which side you're saying? Admin Admin or? side, sir. Yes. Yes, this page, sir. Yes. If you have selected, say for the student, by mistake,
you want to do the internship, but you selected DCS, that you can change. That you can change. But how to change? That is what I'm going to Okay, explain okay. right now. Yes. So in the subject registration master itself, there are some links. Here you can see the subject registration of the student. View subject registration. So you will just put the PRN number and get details. As student is not registered, so it will not be found. Now I will just click join course. The student side. Yes, it is done. And now we will see this. If I want to be the registration, yes, you can see I will get the details. There is a flag, is fees paid. Okay, it is made yes after the registration. In some institutes, this flag is not turned on. Okay, it means what I want to say is some of the colleges ये फ्लैग ऑफ ही रहता है. स्टूडेंट जब ज्वाइन करता है उसके लॉगिन से तब उसको ऑफ ही रखते हैं इस फीस पेड को, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट ऐसा होता है कि उस कॉलेजेस में जो एग्जाम फीस लेते हैं वो सब्जेक्ट वाइज होता है, और जब वो स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म भरेगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा और एग्जाम फी पे करेगा, तब ये फ्लैग ऑन होता है उन कॉलेजेस में. तो उसके लिए एक रोल टाइप सेटिंग है जो मैंने कल बताई नहीं थी आपको शायद. यस, आफ्टर रजिस्ट्रेशन ईच फीस पेड ऑन. तो रजिस्ट्रेशन के बाद में इस फीस पेड का फ्लैग ऑन होना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके लिए ये सेटिंग है. जब आप इसको ऑफ रखते हैं तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करता है फिर भी वो फ्लैग ऑफ ही रहेगा. जब वो एग्जाम फीस पे करेगा तब वो ऑन होगा. उसके लिए ये फ्लैग है, ये सेटिंग भी है. So this is how we can see the registration. Then I will just go to the next link. Edit registration is there. You can see it. Just put the PRN, get the details. So here, if by mistake you have selected the wrong subject, you have to click that subject and just not click, just delete that particular subject. If you want to delete all subject, just select all and click on this delete button. If you want to add a new subject over here, you can click on this add new. Select the subject from the drop down. Here you have option whether you want to make that each fees paid flag on or off, that you can select. Right now I will keep it off also and click on add. So you will see the difference. For these two, fees paid flag is on, so they are visible in green color. For this one, it is in red color. Are you getting? We can just edit, we can turn on this flag and we can modify. Are you getting? Yes. Yeah. Yes, sir. So this is how we can edit the registration of the student. ये फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये फीस पेड का फ्लैग आप ऑन करते हो ना तो स्टूडेंट साइड को ये फ्लैग ऑन दिखेगा, वो फ्रीज दिखेगा पूरा उसको रजिस्ट्रेशन. ठीक है, सेम स्टूडेंट का मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ. यू विल सी द थर्ड सब्जेक्ट ऑल्सो. I'll just turn off that flag. Let us see what happens. And if we just refresh the student login, you can see fees paid flag is off. Okay. So this is edit registration that you can do. Please do it carefully in the institutes where the colleges or the institutes are charging the fees for registration of the student. उस केस में आपको ये बहुत केयरफुली करना है. जैसे पीसीसीओई में स्टूडेंट पे करता है हर एक सब्जेक्ट को रजिस्टर करने के लिए, स्टूडेंट कुछ पेमेंट देता है कॉलेज को. तो इन दैट केस यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली. आप अपने साइड से एडमिन साइड से रजिस्टर बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप गलती से भी इधर से रजिस्टर करते हैं एडमिन साइड से, इन दैट केस उसका पेमेंट कहाँ पे जाएगा? उसका पेमेंट तो आएगा ही नहीं, एंड देयर विल बी अ शॉर्टफॉल इन द अकाउंट साइड ऑफ द कॉलेज. तो वी डोंट हैव टू डील विद दिस एडमिन साइड इन सच केसेस. हमें सिर्फ उनको बताना है कि प्रोसेस क्या है, बट मोस्टली हम ये नहीं करेंगे. हाँ, ऑलरेडी स्टूडेंट ने पेमेंट किया था उसके लॉगिन से, बट कुछ वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है,
और अभी हम उसको करके देना चाहते हैं, उसका रिसिप्ट ऑलरेडी बना है, इन दैट केस यू कैन डू इट. ओके, there is a fresh subject registration form. So here you just enter the PRN. You can do the registration fresh. Just click on add subjects. So you will see the subjects that are eligible. I'll just delete earlier subjects and then we will discuss. Fresh registration. Now just put the PRN number and just click on fetch, add new subjects. Yes. So here there are no subjects visible. So as these are compulsory, you are not able to select them. They will be selected by default. But from drop down, you can select the elective which is applicable to that particular student. Okay, and just confirm it. So this is how you can do the fresh subject registration. Okay, any other query in this registration part? So Yes. generally we create elective batches for institute level elective. Right. So how it works whenever student did their registration from their end? Okay. In that case also, that particular subject will be added in the template, right? And yes, we follow the some different path for the elective batch formation that we will discuss. But because that particular elective batch is linked with the template in this particular template, and under this template the division is offered, and in this division the student is there, right? Yes. So this elective will be visible in the student login. Here the student will be able to select that particular subject from the drop down itself. Yes. Just like the drop down that we have seen right now, same kind of a drop down will be visible for the student here. Just student has to click on that drop down, select the applicable subject and then join course. Means in this case the batch created automatically. Batch? No. Then Registration is different thing. Batch creation is different thing. Please note. then अभी we तक have, बैच क्रिएशन किया ही नहीं है मैंने इलेक्टिव का, देखो. okay. रजिस्ट्रेशन इज डिफरेंट पार्ट. आप Yes. बैचेस नहीं भी क्रिएट करते ना तो भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है स्टूडेंट साइड से. इट इज नॉट मैंडेटरी टू क्रिएट द बैचेस फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन द स्टूडेंट साइड. ठीक है. हाँ, एडमिन साइड आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा. Yes. ठीक है, एडमिन साइड में. बट फिर भी यहाँ पे बैचेस क्रिएशन मैंडेटरी नहीं है, आप पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसीड कर सकते हैं. But it is advisable to go for batches creation first in the student side, in the faculty side, and then go for registration. ऐसा क्यों है ये भी रीजन मैं बता देता हूँ. आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. जैसे ही स्टूडेंट्स या फिर फैकल्टी यहाँ से रजिस्ट्रेशन करता है, स्टूडेंट का सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन करता है, अगर बैचेस पहले से क्रिएटेड है आपकी, तो थियरी सब्जेक्ट की जो भी बैचेस रहेगी, in those theory subject batches students will be automatically allocated. Okay, it works for three cases. One is when the subject is compulsory or department compulsory, CC और DC, तब ये वर्क करता है. ठीक है. बट इलेक्टिव के केस में वर्क नहीं करेगा ये. यस, इलेक्टिव के केस में वर्क नहीं करेगा. बट कंपलसरी सब्जेक्ट के केस में जैसे उधर स्टूडेंट या फिर फैकल्टी रजिस्ट्रेशन करता है तो इधर ऑटोमेटिकली बैचेस में स्टूडेंट आते हैं. ओनली फॉर दी थियरी सब्जेक्ट्स. ओके, थियरी एंड कंपलसरी. बट प्रैक्टिकल्स के लिए हमें अलोकेशन मैन्युअली करना पड़ता है. दैट वी विल डिस्कस नाउ. यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर. और एक पूछना था. There is option freeze template. How it works in another means फ्रीज टेम्पलेट जब करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो एडिट बटन अवेलेबल है क्या? नहीं, वो एडिट वर्क नहीं करता है. कोर्सेस वगैरह एडिट नहीं कर सकते हम फ्रीज टेम्पलेट करते हैं तो.
तो स्टूडेंट अगर उनके एंड से रजिस्ट्रेशन करेगा तो दोनों नहीं, जगह सेम ही उनको उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं ना? ओके। नहीं नहीं नहीं। ठीक। टेम्पलेट फ्रीज का मीनिंग क्या है, यहाँ पे आप कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। यस। लोड टाइप, सब्जेक्ट का नाम, या हम्म, फिर दूसरा कोई सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है इस पर्टिकुलर हेड में, वो आप कर नहीं पाओगे। ओके। यस, दैट इज द लिमिटेशन ऑफ फ्रीज। Yes, you can limit those things. मैं सेमेस्टर 2 लेता हूँ और ये टेम्पलेट देखता हूँ, ये अनफ्रीज दे, देखो अभी फ्रीज नहीं किया है, यहाँ पे फ्रीज बटन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं हर एक सब्जेक्ट, देखो मुझे ये सब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे अलग ही चाहिए था। यहाँ पे सब्जेक्ट हेड 1 यहाँ पे अलग चाहिए। आई कैन एडिट एंड आई कैन सिलेक्ट द अनदर सब्जेक्ट, बट ये कब करना है आपको, बैच क्रिएशन वगैरह होने से पहले। यस। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट चेंज करना है तो आपको पहले बैचेस वगैरह सब डिलीट कर लेने पड़ेंगे, डिलीट रजिस्ट्रेशन डिलीट करना पड़ेगा। इस फ्लो से आप आगे जाते हैं। आपको अगर पीछे कुछ चेंज करना है, सो यू हैव टू फॉलो द रिवर्स पाथ फर्स्ट। आप यस। जितना आगे पहुंच चुके हैं ना, उतना सब आपको डिलीट करते आपको टू कम बैकवर्ड, एंड देन you have to edit and again you will move forward. यस। किसी भी मॉड्यूल में आप ये याद रखते हैं, जिस फ्लो से आप आगे जाते हैं, अगर गलती हुआ है तो आपको रिवर्स आना पड़ेगा वही फ्लो से डिलीट करते करते, एंड देन यू कैन चेंज द थिंग्स दैट यू वांट। ओके, तो So, यस यस, so first we added two subject. Then बराबर। in student side, that student registered that, हम्म and then you added the third subject. हम्म So it is so you refresh this page and automatically the third subject has arrived here. रजिस्टर, So यस। that subject has not registered by that student, no? It has been. स्टूडेंट ने नहीं किया, बट हाँ. वही मैं बता रहा हूँ आपको कि रजिस्ट्रेशन दो साइड से हो सकता है। स्टूडेंट के लॉगिन से भी हो सकता है, अगर स्टूडेंट के साइड में नहीं करना है तो फैकल्टी भी ये जो रजिस्ट्रेशन बटन है ना, इसका यूज करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। Okay. या फिर हमने जो एडिट देखा अभी, फ्रेश हाँ. सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन देखा, वो सब रजिस्ट्रेशन का ही प्रोसेस है। मतलब फैकल्टी या फिर ईआरपी कोऑर्डिनेटर जो भी रहेगा कॉलेज का, उनके लॉगिन से भी सब्जेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं हम स्टूडेंट को। Okay, sir. ठीक है, हम जनरली स्टूडेंट को क्यों करना बोलते हैं, मोस्टली इलेक्टिव्स के केस में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। देखो इस फॉर्म पे रजिस्ट्रेशन अगर आपको करना है, इफ यू क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन, यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, और आप अगर ये फिक्स है कि ये सभी सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट को है तो इट इज वेरी इजी, राइट। बट इलेक्टिव की केस में क्या होगा फिर, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कौन से स्टूडेंट अप्लीकेबल है आपको पहले से पता होने चाहिए ना, तो आपको एक एक करना पड़ेगा। समझो ये दो ही स्टूडेंट है, उनको ये एक सब्जेक्ट है, वो सिलेक्ट करो। फिर से नेक्स्ट दो स्टूडेंट को कौन सा सब्जेक्ट है, वो नेक्स्ट वाला आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो डिफिकल्ट हो जाता है। एंड इन केस ऑफ सम फाइनल ईयर एंड थर्ड ईयर टेम्पलेट्स, कुछ कॉलेज में बहुत सारे इलेक्टिव्स रहते हैं, सो नंबर ऑफ इलेक्टिव्स आर देयर। सो इन दैट केस इट इज वेरी इजी टू आस्क द स्टूडेंट। स्टूडेंट हर एक अपना अपना लॉगिन करेगा, अपने लॉगिन में उसको ड्रॉप डाउन दिखेगा, वो सिलेक्ट करके रजिस्टर करेगा। और अगर कॉलेज रजिस्ट्रेशन में फीस लेना चाहता है तो स्टूडेंट के साइड में ही उसको देना पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. one more role type setting is there. I think we have seen that in view. आप मैंने दिखाया था कल शायद, बट यहाँ पे नहीं है वो। उस सेटिंग से क्या होता है एक्चुअली, एक फीस का भी चेक लगता है। मतलब उसका जो एडमिशन फीस है, अगर बच्चे का स्टूडेंट एडमिशन फीस पेंडिंग है और वो रोल टाइप सेटिंग हम ऑन कर देते हैं, तो सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद उसको मैसेज आएगा योर फीस इज पेंडिंग। पहले आप फीस भरो तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, उसको फॉर्म एक्सेस ही नहीं होगा वो, ये वाला। तो ऐसा भी चेक हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको बोलता है कि स्टूडेंट का सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन होने से पहले हम उससे फी रिकवर करना चाहते हैं हमारा, तो वो चेक लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट को फॉर्म एक्सेस ही नहीं होगा रजिस्ट्रेशन का जब तक वो फी पेमेंट नहीं करेगा उसका। ओके, Yes, sir. yes. Now we will discuss allocation of the students into batches. स्टूडेंट्स को बैचेस में कैसे अलोकेट करना है, दैट वी विल डिस्कस। सो ये भी दो तरीके से होता है। इसके लिए एकेडमिक्स में
क्लास टीचर में एक फॉर्म है, असाइन स्टूडेंट्स टू बैच, यहाँ पे जाना है, एकेडमिक ईयर सेमेस्टर सिलेक्ट कीजिए, देन डिवीजन सिलेक्ट कीजिए, कौन से डिवीजन के लिए आपको ये काम करना है। सो मैं ए डिवीजन लेता हूँ। यहाँ पे दो बटन्स आप देख सकते हैं, वन इज असाइन स्टूडेंट्स टू ऑल बैचेस एंड वन इज इंडिविजुअल। इफ आई क्लिक ऑन ऑल बैचेस, मतलब यहाँ पे आई कैन सिलेक्ट रेंज, say from roll number 1 to roll number 3, I want to assign these students in practical batch 1. So I will select batch 1 from the drop down and I will click on assign batch. So whenever I click on this assign button, automatically in the first batch, for those selected students will be assigned. Okay, then in the next batch, when say I want to assign 6 to 10 or 11, so I will select that range from here. From drop down, I will select batch number, second batch. I will click on assign. So automatically from roll number 6 to 11, the remaining students will be assigned in the second batch. Okay. This form is only for allocating the students in the practical and tutorial batches that you have created. Okay. Apart from theory, theory batches में student automatic assign हो जाता है जैसे वो register करता है, तो उसकी division की जो theory batch है उस बैच में वो स्टूडेंट ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा। तो दिस इज वन वे ऑफ असाइनिंग स्टूडेंट्स इनटू बैचेस। सेकंड थिंग, असाइन टू इंडिविजुअल बैचेस। इंडिविजुअल बैचेस में हम क्या कर सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट का बैच आपको यहाँ पे दिखेगा और हर एक सब्जेक्ट के सामने यू विल सी असाइन स्टूडेंट बटन। तो यू विल क्लिक ऑन दैट असाइन स्टूडेंट बटन, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये फर्स्ट बैच है, तो फर्स्ट बैच में रोल नंबर 1 to 5 ऑलरेडी असाइन है, तो मुझे 6 और 7 भी फर्स्ट बैच में ऐड कर दें। सो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा 6 and 7, आई विल क्लिक ऑन ऐड टू बैच। जैसे मैं क्लिक ऑन ऐड टू बैच करूंगा तो ये दो स्टूडेंट इस लिस्ट में ऐड हो जाएंगे ऊपर। से आई वांट टू रिमूव सम स्टूडेंट फ्रॉम द बैचेस, तो मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ उनको, बट ये कब होगा, जब तक अटेंडेंस फिल नहीं किया है। ठीक है, so this is how you can assign the students to batches. यहाँ तक क्लियर है? हॅलो सर. यस. सर मला विचारायचं होतं, आपण सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन केलं हम्म. आणि एका मुलाचं इलेक्टिव्ह 1 ए बी आहे, समजा ए ला सिलेक्ट केला आणि त्याचा नंतर आपण बी केला, परत रजिस्ट्रेशन केलं, तर ते ओव्हरराईड होईल का? नाही, ओव्हरराईट नाही होणार ना, दोन सब्जेक्ट रजिस्टर झाले. ओके, त्याचे म्हणजे क्रेडिट जेवढे पाहिजे होते ते कम्प्लीट झाले, फुल झाले आणि त्याला तो डिलीटच करायचा आधी नेहमी चुकलेला सब्जेक्ट आणि मगच म्हणजे रजिस्टर करायचा. केलं म्हणजे एखाद्या स्टाफने केलं तर काय होईल? ऍक्च्युली ती केस बघावी लागेल. मला असं वाटतंय की एकच इलेक्टिव्ह अलाउड आहे, तर आय थिंक ते वर्क नाही होणार. आणि ते तुम्ही काल सांगितलं होतं नवीन आलं एका बरोबर. याच्यामधले 6 मधले 2 सिलेक्ट करू शकतो. हा, येस येस येस. हा, मग त्याच्यामध्ये जर समजा 6 मधले 2 सिलेक्ट केले आणि त्यांनी तिसरा पण सिलेक्ट केला तर तो एक रिमूव्ह जर अलाउड नाही होता. करणार तिसरा. ओके, अलाउड नाही करणार. ओके ओके. पिकअप काउंट आपण त्यासाठीच डिफाईन करतोय ना, मुलाला अलाउड किती आहेत सिलेक्ट करायला, 2 आहेत, मग तो चेक ऑलरेडी लावलेला असतो तिकडे. नाही, एकदा केले 2 घेत केले, नाही शकत. एकदा 2 केले आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट टाइम येऊन परत तिसरा करायला लागला तर नाही होणार शक्यच ना? नाही होणार ना. नाही, कारण ऑलरेडी 2 झाले तर त्याला ड्रॉप डाऊन एनेबलच राहत नाही. ओके, ठीक आहे. आणि इलेक्टिव्ह बॅचेस मध्ये सर आपण न्यू याच्यात ऍड केलं, सब्जेक्ट चेंज केला त्याचा आणि त्या बॅच मधून त्याला ऍड केलं एक का नाही, म्हणजे एक ए काढून आणि बी, टाकायचं पाहिजे बॅच मधनं. पण ती अटेंडन्स डिलीट करावी लागते ना? हो. एक मला बॅच मधनं काढता येत नाही. हा, ते बॅच मधून कसं काढायचं ते दाखवता का? बॅच मधून काढण्यासाठी सिंपल आहे. आता मी जसं दाखवलं ना तुम्हाला, इंडिव्हिज्युअल स्टुडंट बॅचचा जो फॉर्म आहे ना, त्या पेज वरनं काढता येतं. एक मिनिट, अकॅडमिक्स क्लास टीचर असाइन स्टुडंट्स टू बॅचेस या पेज वर जायचंय. हे कंपल्सरी सब्जेक्ट आहे. नाही, इलेक्टिव्ह कंपल्सरीचं रजिस्ट्रेशन मधून पण हा, इथून काढता येतो. ओके, इलेक्टिव्हचं बघायचंय तुम्हाला. हा,
ओके, कंपल्सरीचं बॅचेस व्यू ऑफर टेम्पलेट बॅचेस मधून पण होत आहे. ठीक है, वी विल फर्स्ट डिस्कस हाउ टू क्रिएट इलेक्टिव बैचेस. ओके 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 थैंक तो इलेक्टिव बैचेस के लिए टेम्पलेट के पेज पे ही लिंक है, देयर इज अ लिंक क्रिएट इलेक्टिव बैच, आपको वहां पे क्लिक करना है. ऑन दिस पेज यू विल सिलेक्ट द एकेडमिक ईयर एंड सेमिस्टर 23-24 and just fetch it. So you will see the list of subjects. जो इलेक्टिव है वही यहाँ पे आएंगे. कौन से आएंगे? इंस्टीट्यूट लेवल इलेक्टिव और डिपार्टमेंट लेवल, दो ही आएंगे. डिवीजन लेवल इलेक्टिव इस पेज पे नहीं आएगा आपका. डिवीजन लेवल इलेक्टिव का फ्लो और कंपलसरी सब्जेक्ट का फ्लो टेम्पलेट के पेज पे ही आप कैरी आउट कर सकते हो, इधर से ही होता है. यू कैन ट्रीट दैट डिवीजन लेवल इलेक्टिव एज अ कंपलसरी, वो इधर से ही हो जाएगा पूरा, वो इधर न्यू फॉर्म में नहीं आ जाएगा इधर. ठीक है, क्रिएट इलेक्टिव बैच में नहीं आएगा. यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, प्लस बटन पे क्लिक करना है. ठीक है, प्लस बटन पे आप जैसे क्लिक करोगे यू विल सी नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. इस सब्जेक्ट को कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन दिखेगा आपको यहाँ पे. जैसे यहाँ पे 36 का काउंट है तो उसका बाइफर्केशन है यहाँ पे. अगर ये इंस्टीट्यूट लेवल इलेक्टिव है तो मल्टीपल डिपार्टमेंट के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, मतलब कंप्यूटर के 6, मैकेनिकल के 11 और कोई और ब्रांच के से 13 स्टूडेंट, ऐसा हो सकता है. इट इज पॉसिबल. ठीक है, ये सिर्फ क्या है, रजिस्ट्रेशन का काउंट है अभी हमने. और यहाँ पे जो दिख रहा है वो स्टूडेंट का एक्चुअल डिवीजन है. ठीक है, अभी मैंने इलेक्टिव का कोई बैच ऐड नहीं किया है यहाँ पे. जैसे हमने टेम्पलेट के पेज पे यहाँ पे बैचेस पे क्लिक करने के बाद कंपलसरी सब्जेक्ट के बैचेस हमने यहाँ पे क्रिएट की थी, राइट, और उसको इंस्ट्रक्टर असाइन किया था एंड वी हैव आल्सो एडेड द इंस्ट्रक्टर्स. वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं फॉर इलेक्टिव्स, इंस्टीट्यूट लेवल और डिपार्टमेंट लेवल इलेक्टिव. वो टेम्पलेट के पेज पे नहीं होगा, उसके लिए अलग से लिंक है उस पेज पे. यू हैव टू हिट दैट लिंक and you have to follow that process here itself. So just click on this plus, you will see the list of students registered for that subject from different department. आपको क्लिक करना है क्रिएट इलेक्टिव डिवीजन एंड बैच. कितनी बैचेस आपको चाहिए? अब ऐसा पॉसिबल है ये डिपार्टमेंट से 100 स्टूडेंट्स है कंप्यूटर से, तो मुझे 2 बैचेस करनी है. मैकेनिकल से 100 स्टूडेंट्स है, मुझे मैकेनिकल की 2 करनी है. तो ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है. तो आपको ये पहले प्री डिफाइन आपका होना चाहिए कितनी बैचेस आपको करनी है. से मुझे 2 बैचेस करनी है, सो आई विल सिलेक्ट 2. एक्चुअली दिस शुड नॉट बी डिवीजन, ये बैच होना चाहिए. सिलेक्ट नंबर ऑफ बैचेस दैट यू वांट टू क्रिएट. सिलेक्ट, क्लिक ऑन प्रोसीड. पहला जो बैच है उसको कौन सा इंस्ट्रक्टर होगा, दैट यू हैव टू सिलेक्ट. सेकंड बैच का इंस्ट्रक्टर कौन होगा वो आपको सिलेक्ट करना है. यहाँ पे क्लिक करना है असाइन इंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो 2 बैचेस क्रिएट हो जाएगी, 2 बैचेस को इंस्ट्रक्टर भी असाइन हो जाएंगे. जैसे बैचेस क्रिएट हो गई, अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट को इस फ्लो में ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टेप आ जाता है. अभी हमको बैचेस में स्टूडेंट असाइन करने हैं. ये दोनों भी बैचेस जो है वो ब्लैंक है. तो इस फॉर्म पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, फर्स्ट बैच. फर्स्ट बैच में कौन से स्टूडेंट आपको इंसर्ट करने हैं. तो हमने ऑलरेडी देखा था रजिस्ट्रेशन प्लस बटन के पेज पे, वहां पे 4 डिविजन आपको दिख रही थी और हर एक डिवीजन से कुछ 8-10 बच्चों ने से रजिस्टर किया था इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को. तो सबसे पहले ए डिवीजन से कितने बच्चों को फर्स्ट बैच में इंसर्ट करना है वो आपको करना है यहाँ पे. सो यू विल सिलेक्ट फर्स्ट बैच, और फर्स्ट बैच में इस पर्टिकुलर डिवीजन के कितने बच्चों को इंसर्ट करना है, इसके लिए हमें प्रोसीड पे जाना है. और उस पर्टिकुलर डिवीजन से, ए डिवीजन से जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड है वो सब आपको यहाँ पे रोल नंबर्स दिखेंगे. आपको जो जो स्टूडेंट इस पर्टिकुलर इलेक्टिव बैच में ऐड करने हैं वो सिलेक्ट करने हैं. अगर थियरी का है तो मोस्टली सब सिलेक्ट करना है और सेव करना है आपको यहाँ पे. ठीक है, सिमिलरली मुझे ये सी डिवीजन का भी फर्स्ट बैच में इंसर्ट करना है, तो प्रोसीड करना है फिर से, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव करना है. फिर सेकंड बैच लेता हूं मैं. सेकंड बैच में मुझे ये बाकी 2 डिवीजन के स्टूडेंट चाहिए, तो मैं ये डिवीजन सिलेक्ट करूंगा, फिर से प्रोसीड, क्लिक ऑन रोल नंबर्स एंड सेव. देन आई विल सिलेक्ट नेक्स्ट डिवीजन, प्रोसीड,
देन अगेन क्लिक एंड सेव। तो ये स्टेप है, ये स्टेप से आपके स्टूडेंट इस बैचेस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने कोई बैचेस में स्टूडेंट ऐड नहीं किया है। आई विल जस्ट गो बैक and just we will see what happens. Select the year and semester, click on plus button. हाँ, अभी पहले मुझे इतना ही फॉर्म दिख रहा था देखो, बट मैंने ऑलरेडी अभी क्या किया है, बैचेस क्रिएट कर लिए, 2 बैचेस। तो मुझे वो 2 बैचेस यहाँ पे दिखेंगी, बट मैंने स्टूडेंट अलोकेशन नहीं किया, मुझे बाद में करना था इसलिए नहीं किया मैंने। तो आप बाद में जाके भी कर सकते हो, बट उस केस में आपको ये फ्लो फिर से एग्जीक्यूट नहीं करना है क्रिएट वाला। आपको सिंपली जो ऑलरेडी क्रिएटेड बैचेस है, यहाँ पे प्लस बटन पे जाना है, click on this plus button, select the students that you want to add into that particular batch and then add to batch। यहाँ पे add to batch करोगे तो आपके स्टूडेंट्स उस बैच में ऐड हो जाएंगे। If I just refresh this page again, 23, 24 semester 1 and fetch plus, तो यहाँ पे देखो 4 स्टूडेंट्स ऐड हो गए। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्टिव बैच का फ्लो। यहाँ पे एक बटन भी है, प्रोसीड फॉर स्टूडेंट अलोकेशन। इस प्लस बटन में क्या होता है, आपको एक एक स्टूडेंट को क्लिक करके आपको ऐड करना पड़ता है। जैसे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो इस फॉर्म में मुझे एक एक स्टूडेंट ऐड करना पड़ता है सिलेक्ट करके। यहाँ पे एक बटन भी है, प्रोसीड स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट अलोकेशन। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो वो लास्ट वाला फॉर्म आ जाएगा जो स्टार्ट में आता था। यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, बैच सिलेक्ट कर सकते हो, फिर से डिवीजन सिलेक्ट कर सकते हो, प्रोसीड करो, प्रोसीड के बाद में वो प्रोसेस फिर से आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो सिंपली। मतलब मल्टीपल स्टूडेंट्स एट ए टाइम यहाँ से ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको डिवीजन का फिल्टर भी मिलेगा जो कि प्लस बटन की केस में आपको नहीं मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा और इधर अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो मुझे सभी स्टूडेंट एक साथ दिख जाते हैं, जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड है पूरे दिख जाएंगे मुझे। बट मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे डिवीजन वाइज सेग्रीगेशन देखना है, तो आप ये बटन यूज करो, प्रोसीड फॉर स्टूडेंट अलोकेशन। दोनों तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं स्टूडेंट को। क्लियर है सर? यस। क्रिएट के टैब पे क्लिक करके अगर आगे जाते हैं तो वहां पे शॉर्ट्स में लिंक्स दिखती है, तो उनका यूज कैसे? ओके, वो लिंक्स देखना। प्रोसीड पे जाने के बाद भी हम्म, यस, ये ठीक है तीनों ना? लिंक। हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, डिवीजन इलेक्टिव डिवीजन स्टूडेंट अलोकेशन कर रहे हैं। स्टूडेंट, ओके, ये एग्जैक्टली क्या है ये आप बोल रहे हैं ना? ठीक है, मैंने क्लिक किया, देखो स्टूडेंट डिवीजन अलोकेशन। देखो हर एक स्टूडेंट के सामने क्या आ रहा है, बैचेस आ रही है। मतलब आपको एक एक स्टूडेंट को करना है रैंडमली, ओके। फिक्स नहीं है। स्टूडेंट डिवीजन अलोकेशन, इस पेज पे आप जैसे जाते हो ना, हर एक स्टूडेंट के सामने यहाँ पे रेडियो बटन आता है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो वो कौन सी बैच में जाएगा। ये स्टूडेंट सेकंड में जाएगा, ये स्टूडेंट सेकंड में जाएगा, ये फर्स्ट में जाएगा, रैंडमली। अगर आपका रैंडम अलोकेशन है आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वो काउंट ऐड होता जाएगा। मैंने सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे 4 हो गया, फिर से सिलेक्ट किया, देखो 5 हो गया। ठीक है, 6। तो ये रैंडमली अगर अलोकेशन करना है तो ये भी फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, डिवीजन स्टूडेंट लिस्ट, इस पेज पे अगर आप क्लिक करते हो, लिंक पे क्लिक करते हो तो क्या आता है, यहाँ पे बैच सिलेक्ट करो, यहाँ पे डिवीजन सिलेक्ट करो, प्रोसीड करो। प्रोसीड करने के बाद में ऑलरेडी जो एडेड है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसका यूज क्या है मैंने देखा नहीं है अभी तक, जस्ट चेक इट, पता नहीं है। हाँ, स्टूडेंट रेंज डिवीजन अलोकेशन, ये जो नॉर्मल हमारा जो प्रोसेस है यहाँ से होता है। ये फर्स्ट पेज, स्टूडेंट रेंज डिवीजन अलोकेशन, प्रोसीड, सिलेक्ट द स्टूडेंट्स एंड क्लिक ऑन सेव। अगर ऑलरेडी वो स्टूडेंट कोई और बैच में ऐड है तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि वो ऑलरेडी B2 में ऐड है। ये देखो, यू विल सी इट।
Yes. ये मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली क्या है एग्जैक्टली। प्रोसीड करते हैं तो आई थिंक हमें पता चलता है कि कितने स्टूडेंट है उस बैच में, इस डिवीजन के। हाँ, मतलब Yes. फर्स्ट बैच में ए डिवीजन के कितने स्टूडेंट्स है ये यहाँ पे दिखेगा। बी डिवीजन के या फिर सी डिवीजन के नेक्स्ट कितने स्टूडेंट है, एक है, ये दिखेगा आपको। इस डिवीजन का कोई नहीं है या फिर इसका इसका भी कोई नहीं है, तो नो डेटा फाउंड। एंड आई थिंक डुप्लीकेट एंट्री में आई थिंक ये है कि एक स्टूडेंट अगर मल्टीपल बैच में है तो Yes. वो यहाँ से आई थिंक वेरीफाई होता होगा, दैट वी नीड टू चेक। आई ऑल्सो डोंट नो। यस, ठीक है, ये क्लियर है आपका बैच एलोकेशन। Yes. यस, सो ये पूरा रजिस्ट्रेशन का फ्लो है। तो एकेडमिक्स हम स्टार्ट नहीं कर सकते विदाउट रजिस्ट्रेशन। ओके, इसमें अगर है और भी डाउट्स यू कैन आस्क। प्रमोट लिंक, प्रमोट स्टूडेंट के लिंक पे सर, प्रमोट स्टूडेंट, वो वाली लिंक है ना प्रमोट स्टूडेंट की, हाँ वहाँ पे कुछ। वहाँ पे क्वेश्चन है। Yes. जस्ट अ मिनट, लिंक कहाँ पर है डिवीजन मास्टर में, प्रमोट स्टूडेंट है क्या? यहाँ पे और बहुत सारी एक्चुअली फैसिलिटीज है बट अभी हम कवर नहीं कर पाएंगे वो क्विकली। डिवीजन स्ट्रक्चर, लॉजिक वगैरह, सो मेनी थिंग्स आर देयर दैट वी कैन नॉट कवर राइट नाउ, बट बेसिक फ्लो क्या है वो मैंने बता दिया। जस्ट मिनट, सील में अवेलेबल है, वहीं पे देखते हैं। रजिस्ट्रेशन, सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन, सॉरी डिवीजन मास्टर, प्रमोट स्टूडेंट। ओके, यस, ठीक है सर, यूजुअली हम शिफ्ट जनरल यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी एक इशू लाया था सर बलवंत ने, यस, तो उसने क्या किया था, ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट था, हाँ सिलेक्टेड रहता है। वो एक्चुअली क्वेरी रेज किया है, ये ऑप्शनल आना ही नहीं चाहिए, कंपलसरी हाँ, शिफ्ट होना चाहिए। हाँ, तो अगर ऑप्शनल में गया तो उस टाइम पे क्या करना? ऑप्शनल पे नहीं जाना है, वो प्रॉपर होगा ही नहीं फिर। नहीं, हाँ, क्योंकि हमने सब चेक किया था नहीं सर। नहीं, इसमें ये पेज में है क्वेरी, उसका रेज किया है। यस, यस, यहाँ यहाँ पे पे शिफ्ट मॉड्यूल भी कंपलसरी ही होना चाहिए, यस सर, यस। क्योंकि सी अगर कॉलेज में शिफ्ट नहीं है तो एक तो रहती है ना जनरल, वो जनरल आनी चाहिए बाय डिफॉल्ट, ऑप्शनल नहीं होना चाहिए शिफ्ट। यस सर, यस, क्योंकि ये जनरली होती है सर मिस्टेक। यस, नहीं शिफ्ट कैन नॉट बी ऑप्शनल, ये कंपलसरी है, आइदर जनरल या फिर सेकंड। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक तो आना ही चाहिए, ऑप्शनल नॉट अलाउड। यस, ठीक है सर। सर यहाँ पे मॉड्यूल भी नहीं पूछा है, तो मॉड्यूल गिरता है क्या? चाहिए एक्चुअली, मॉड्यूल भी चाहिए, उसका भी है, क्वेरी दिया है, वो सर पूछना चाहिए। क्योंकि जो आपने डिवीजन ऑफर किया है वहां पे मॉड्यूल भी तो पूछा है ना। यस, यस सर, यस, और रोल कॉल लिस्ट में भी नहीं आता है ना मॉड्यूल, वो हाँ, डालना पड़ता है फिर। यस, नहीं वो तो वो एक्चुअली किया है, मतलब वो जो दो रोल टाइप सेटिंग्स है ना, यस, शिफ्ट और मॉड्यूल एप्लीकेबल, इसके ऊपर वो आ जाता है फाइल में, बट एक्चुअली क्लाउड पे जो सैंपल फाइल्स अवेलेबल है ना वही गलत थी। ओके। यस, Deepali is having some doubt. सर प्रमोटचा जो पेज आहे ना, हम्म, त्या पेजवर जे सॉर्टिंग लॉजिक हाँ, हे सुद्धा बॅकएंडनी टाकायला लागतं सर. ते फ्रंट एंडनी प्रोव्हिजन नाही आहे आणि तिथे ते आपल्याला करावं लागेल. अच्छा, हे ड्रॉप डाउन मध्ये जे येतं ते ना. हो, हे फ्रंट एंडनी प्रोव्हिजन नाही आहे. येस येस, फ्रंट एंडला नाहीये ही प्रोव्हिजन, पण आय नाही, थिंक पण हे ऑप्शन असं का दिसतं, म्हणजे एवढं मोठं आपल्याला एंटर कर बॅक एंड टाकायला लागतं काय? नाही, हे ऑटोमॅटिक येतं सर, म्हणजे नवीन इन्स्टिट्यूटला पण नाही, आता नवीन इन्स्टिट्यूटला आपल्याला ते बॅकएंडनी टाकून घ्यायला लागतं. ओके, एकच मिनिट, एखाद्या नवीन कॉलेजचा असेल तर बघू आपण. मी केलं ना सर, आता मी रिसेंटली संजीवनीचं केलं होतं ओके, ना. तुम्ही टाकून घेतलं ते.
हा बॅकएंडने टाकायला लागतो ते. ओके ओके ओके, मग हे नोट करून ठेवावं लागेल. येस. म्हणजे नवीन इन्स्टिट्यूट क्रिएट होताना हे ऑटोमॅटिक पडलं पाहिजे असं. हम्म. येस.